चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द मेथड 1 ऑफ सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल एंड दिस इज द मेथड 2 ऑफ सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन मेथड 2 व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम फिनॉल। हियर फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल हाउ कुड यू synthesize paracetamol? Okay, so starting material phenol. Take phenol as starting material. This is the structure of throw bond. This is structure of phenol. Okay, to this phenol, this is you can write as step 1. Okay, step 1. In step 1 to phenol, if you do nitration to phenol ring, what is the nitrating agent? Nitrating agent is H2SO4 dilute in presence of HNO3. Okay, what it will form? Nitrating agent, it will form nitrophenol. What it will form? Nitrophenol, and it will form both ortho, this is orthonitrophenol and paranitrophenol. Okay, ortho and paranitrophenol. Okay, so here what is the role of this reagent H2SO4 and HNO3? It will create an electrophile. तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे क्रिएट करेगा? देखो यहाँ पर मैकेनिज्म देखो, H2SO4 with HNO3. Write the structure of H2SO4. Okay, OH. This is the structure of H2SO4. To this HNO3, if you write, you can write it as HONO2. Yes, HONO2. So here H2SO4 behaves as acid and HNO3 behaves as base. So HNO3 acid will donate its hydrogen and it will take by the oxygen lone pair of nitric acid. Okay, and this bond moves over to oxygen and take regenerate will participate to with sulfur group. So what it will form? It will form what? This is leaves as living group, suppose, and this is regeneratively stabilized, and this negative charge over oxygen is regeneratively stabilized with sulfur double bond or sulfur double bond. Okay, so what will here oxygen takes the hydrogen, what it will form? OH. One is there before, another is attached to oxygen, and as oxygen donates its electron, then positive charge over oxygen and Na2. in the next step क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो वाटर ग्रुप OH2 and oxygen electronegative atom and positive charge over oxygen is not stable. वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले लेगा, ठीक है. दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय ऑक्सीजन. So what it will form? Water group releases as here minus water plus बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रही है नाइट्रोजन के पास से. सो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. हियर NO2 plus is a electrophile. Okay, so this nitrating agent role, it will create an electrophile NO2 plus. Okay, got the mechanism there. So in the next step, either this is OH is electron donating group, it will create either ortho or para product. So what is the mechanism? The oxygen lone pair return back, and this bond may attach to electrophile NO2 group, and this will form ortho product. This is ortho product. O product I have written ortho product. Okay, so if this bond return back and this bond moves over to this carbon single bond, and this if this attack to NO2, it will form what? Para product. Okay, got it? Simple. Okay, this step is known as what? Electrophilic. You can write it as electrophilic. This is electrophile is what? NO2 plus. Electrophilic aromatic ring is the phenol ring. Aromatic substitution. What do you mean substitution? One group replaced by other group. Here hydrogen, here in this position hydrogen and in this position hydrogen is replaced by NO2 group or substituted by NO2 group. That is why substitution. So electrophilic aromatic substitution step. Also you can write this step as nitration of phenol. In exam you can write step 1 as nitration of phenol too. Okay, this is the first step. Okay, coming to step 2. This is first step. Coming to step 2. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर देखो बोथ ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है. उन दोनों के बीच में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है? ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा है या पारा प्रोडक्ट? यू कैन सी हियर
NO2OH para product. In para product there is intermolecular hydrogen bonding, okay, and in ortho product there is in ortho product there is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular and intermolecular hydrogen bonding all of you know. यहाँ OH bind होगा another NO2 को, NO2 bind होगा यहाँ another OH group को, ठीक है. तो that is why this para product is more stable because of what reason is what intermolecular. पहला reason है intermolecular hydrogen bonding and second reason है क्या है why para stable. ओके, तो सेकेंड रीजन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ OH और NO2 उन दोनों के बीच लिटिल स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. NO2 लार्ज ग्रुप एंड OH ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा क्रिएट होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर NO2OH काफ़ी दूर में है तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्मेशन नहीं होगा. तो दिस इज दैट इज वाई पारा प्रोडक्ट इज ऑल्सो स्टेबल. सेकेंड रीजन वाज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन पारा प्रोडक्ट. Less steric hindrance. Okay, got it. So this para product is stable and you can write it as a major and this as minor. Ortho product is minor and para product is major. So next step में क्या होगा, पारासेप्टेमोन के लिए हमको ये स्केलेटल चाहिए, पारा प्रोडक्ट की स्केलेटल चाहिए, ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं चाहिए. तो ऑर्थो प्रोडक्ट रिएक्शन में दोनों फॉर्मेशन होगा. इन द रिएक्शन ऑर्थो प्रोडक्ट में होगा, बीकर में ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, पारा प्रोडक्ट में होगा. तो कैसे वो दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट आप करोगे, तो पहले देयर आर टू मेथड्स यू कैन यूज. वन इज HPLC, ओके, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. यू कैन यूज HPLC टेक्निक और column chromatography. These two techniques are used to separate the mixture, okay. By separating the mixture we will get our desired para product, okay. So para product, and you take that para product as starting metal in step 2, right. para product only हमने अभी सेपरेट कर दिया para product को through HPLC and column. So para product here. So यहाँ पर कौन सी ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप को अमीन करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो NO2 को अगर हम रिड्यूस करेंगे बाय गिविंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, आइदर बाय गिविंग रिड्यूसिंग एजेंट और एनी मेटालिक रिडक्शन इट विल फॉर्म अमीन. सो देयर इज ए रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड NaBH4, ओके, सोडियम बोरोहाइड्रेट. दिस इज हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाई हियर हाइड्रेट ग्रुप H-, okay, here hydride group in NaBH4 behaves as a nucleophile, okay. Either you take NaBH4 or I am writing or any of the two reagent you can use, or you can use SnACl. This is metallic reduction, stannum in presence of hydrochloric acid. So यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ऐड होगा फ्रॉम HCl, 2 moles of water रिलीज होगा by taking this oxygen and water H from HCl. 2 moles of water release होगा by taking 6 moles of hydrogen from HCl. You can take NaBH4, also you can take SnACl, okay. By any of the reagent we can reduce NO2 to NH2 group, amine group. So चलिए reduce करते हैं, it will form NH2. Got it. And the step 2 is known as what, the conversion or reduction, you can say the reduction of nitro group to amine group. The step 2 is reduction of nitro group to amine group, okay. Got it. Yeah, it is easy, very easy. So this is step 2. So coming to step 3, okay. In step 3 I am writing here for group GP, okay. This is step 2, this is step 1, this is step 2, this is step 3, okay. This is extra fundamental. This is step 3. In step 3 थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे यहाँ अभी क्या प्रोडक्ट मिला है, पारा अमीनोफिनॉल, ठीक है. पारा अमीनोफिनॉल, टेक पारा अमीनोफिनॉल, ओके, OH NH2 para aminophenol. To this if you add, okay, to this if you add any anhydride, structure of anhydride all of you know, I am writing here structure of anhydride CH3CO OCO CH3.
two carbonyl groups, okay, two carbonyl groups adjacently attached to the oxygen. Let us give this anhydride CH3COO COCH3, okay, in presence of sodium acetate in presence of is a solvent here, ठीक है, CH3COO minus in presence of sodium acetate, anhydride in presence of sodium acetate. क्या mechanism इसका क्या होगा? So you can ask question yourself that there is nitrogen and oxygen, okay, which is more nucleophilic, nitrogen or oxygen? Okay, so how to know? Compare the electronegativity difference between oxygen and nitrogen. Which is more electronegativity? Oxygen is more electronegative, so it will not give its lone pair of electron to this electrophilic center. So nitrogen is here more nucleophilic, it will attract to carbonyl center and this bond moves over to oxygen and it will form one. I am writing the steps, okay, OH NH attached to O minus, ठीक है, O minus attached to CH3 okay, it is also attached to one oxygen and COCH3, okay, understand? So in the next step क्या होगा? This negative charge again return back to form double bond and this group acetate OCOCH3 is acetate group, is a good living group. Acetate group lives as a good living group, CH3CO minus. What it will form? Okay, CH3CO minus, CH3CO minus as a living group. Okay, so क्या फॉर्मेशन हुआ अभी? NHCOCH3, ये ग्रुप निकल के चला गया, तो क्या रेस्ट रह गया? NHC डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज व्हेन रिटर्न बैक डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3. You can write it here, OH double bond NH C double bond O CH3 and ये स्ट्रक्चर किसका है? This is the structure of paracetamol. The other name is acetoaminophene. Okay, so paracetamol synthesis हो गया. ये स्टेप बहुत सिंपल स्टेप है. पिछले बार जो स्टेप किया, पिछले बार जो मेथड किया था सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल वो थोड़ा लेंदी था, लेकिन ये वाला बहुत सिंपल है, paracetamol. Okay, this is the method 2 of synthesis of paracetamol. Okay, and this step 3 you can write step 3 as what? Nucleophile addition. This is just nucleophile addition of NH2 group to carbonyl group. You can write this step as nucleophilic addition of NH2 or amine group, NH2 group to carbonyl group. Carbonyl group or carbonyl compound you can write. Okay. So I think this side is now visible to all of you. Before it was not visible. So हमने क्या किया, मेथड 2 में कैसे पैरासीटामोल सिंथेसिस किया? In 3 steps. In step 1, this is electrophilic aromatic substitution, where phenol ring undergoes nitration process to give both ortho and para product, and the para product is the major product and stable product, and also para product we isolate by the para product, because from para product you can see we are synthesizing what? Paracetamol, and for this synthesis of paracetamol this is the skeletal NO2 group attached to para position, similarly NH group attached to para position here. So that is why we have the desired compound here is para product. So to isolate that para product we use HPLC or column chromatography to isolate the para product. So in the next step what will happen? In the step 2 we have discussed the reduction of nitro group to amino group. Nitro group get reduced by the presence of reagent sodium borohydride either or SNHCl. It is a metallic reduction to get para-aminophenol. And in the third step it is the nucleophile addition of NH2 group to carbonyl group. Here is NH2 group and NH2 group is more nucleophilic than oxygen. Here OH hydroxyl group, the NH2 group attached to, here is anhydride structure. I have written this side anhydride structure attached to the anhydride structure in presence of solvent sodium acetate. It forms what? Paracetamol by leaving the release of living group acetate group. Okay, this is the structure of paracetamol and this is the method 2 of synthesis of paracetamol. If in the exam the examiner will ask write the synthesis of paracetamol by taking starting material what? para nitrophenol. Okay, अगर एग्जाम में आएगा पारा नाइट्रोफिनॉल से कैसे पैरासीटामोल कैसे सिंथेसाइज करोगे, तो आप क्या
कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टेप 2 से स्टार्ट करोगे। फ्रॉम स्टेप 2 यहाँ पारा नाइट्रोफिनॉल आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, तो उसके बाद उसको रिडक्शन करेंगे, उसके बाद जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे अनहाइड्रेट ग्रुप, तो यह क्या फॉर्मेशन करेगा, पैरासीटामोल। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? So next we are going to discuss about the theoretical uses of paracetamol। paracetamol का क्या क्या क्लिनिकल यूजेस होता है। तो पहला पॉइंट है paracetamol कैन बिहेव्स बोथ analgesic and antipyretics। राइट विथ मी, paracetamol both behaves as analgesic की तरह काम करेगा एंड एंटीपायरेटिक्स की तरह भी, एंटीपायरेटिक्स। ओके, एंटीपायरेटिक्स। ओके, सो analgesic, it is a weak analgesic, you can say, not strong analgesic, it is a weak analgesic। okay, and antipyretics, its main role is it behaves as antipyretics। so as an antipyretics first, as an antipyretics ओके, आज एन एंटीपायरेटिक्स का रोल क्या होता है, ये टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। तो आज एन एंटीपायरेटिक्स यू कैन राइट इट ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर, इट ब्रिंग्स डाउन और रिड्यूस, इट्स ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। ओके, इन केस ऑफ हाई फीवर, आप सबको पता होगा जब भी आपको फेवर होता है तो डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, पैरासीटामोल 500 और पैरासीटामोल 650 इन केस ऑफ हाई फेवर। ओके, तो आज एन एंटीपायरेटिक्स हो गया। उसके बाद आज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का क्या रोल होता है, इट रिड्यूसेस द बॉडी पेन। एनाल्जेसिक एग्जाम्पल इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस एज टेकिंग एज एग्जाम्पल एज इबुप्रोफेन सिंथेसिस एंड इट्स यूजेस। सो आज एन एनाल्जेसिक, as an analgesic, it reduces, write with me, it reduces the mild to moderate pain। okay, mild to moderate pain, why, because it is a weak analgesic। but in the last class we have taught about ibuprofen synthesis and that was a strong analgesic। ibuprofen was strong analgesic and that was used for severe body pain, but paracetamol as weak analgesic, it reduces the mild to moderate pain। okay, so what are the mild to moderate pain examples? to headache, you all have headache। okay, next is toothache, different arch and pain। okay, arches and pain। so next, menstrual period pain, these are the example, menstrual to mild to moderate pain, menstrual period pain। next, osteoarthritis। okay, 70%, 60 to 70% of Americans are suffering from this osteoarthritis disease, osteoarthritis। okay, got it? so these are the two basic therapeutical uses of paracetamol, as an analgesic, weak analgesic, also as an antipyretic। okay, thank you।